Hello everyone, myself Kushali Katiria. In this video, we discuss a statistical learning method. What is a statistical learning? Statistical learning is the when we have a uncertain reasoning. That means uncertain knowledge. Okay, uncertain reasoning method can be used for the learning for observation. Agent can handle uncertain by using the method of probability and decision theory. For this, first they should be learn about the probabilistic theory of the word experiment. Okay, we have already discussed in Bayesian belief network that's when we have uncertain knowledge, that means हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है कि क्या कब होने वाला है, या तो फिर हमारे पास कोई प्रॉपर उसका नॉलेज नहीं है, प्रॉपर उसका डेटा नहीं है. So if we have this kind of the knowledge, like if we have a uncertain knowledge, then we use the probability or probabilistic reasoning. Okay, so probabilistic reasoning and decision theory is the most probably used method for the uncertain knowledge, for the uncertain reasoning. So here we will discuss about the statistical learning method. Okay, statistical learning method is the use for the identify the probability from the uncertain reasoning or uncertain knowledge. So in this chapter or in this theory topic, we will discuss about the learning with complete data. When we have a complete data, so when we have a hidden data, then that means we have a uncertain data. Okay, when we have a complete data, that means if we have a table that have a 5 columns, 7 columns and 5 rows. Okay, but all columns and all rows are the fulfilled. Okay, by any value or any details. This kind of the thing is learning with complete data. If we talk about the learning with hidden data, that means we have a missing some information from our data and knowledge. So this kind of the method called learning with hidden data. So from this kind of the data, this kind of the knowledge, when we want to deal with this kind of the knowledge and data, we use the EM algorithm. So in detail we will discuss about EM algorithm for next video. Third one is the instant based learning, neural networks. We have already discussed about it, neural net, like artificial neural net. Okay, back propagation, perceptron, as well as Hopi-field network, recurrent network. Okay, so we have already discussed briefly in neural nets. And last one is the kernel machine. So this one is the all are the statistical learning method for the uncertain domain or uncertain reasoning. So let's start with this. What first in this video we only discuss the statistical learning method, only discuss the introduction of statistical learning. When we used a statistical learning method, so we discuss this kind of the scenario in our this video. So what is a statistical learning? Statistical learning, that means predicates based from the data. Okay, हमें क्या करना है? Statistical learning, that means predict the data from the given data, predict the knowledge from the given data. हमारे पास जो already knowledge है, uncertain knowledge है, certain knowledge है, any kind of the data, उसके ऊपर से क्या करना है? Prediction करना है. Prediction, that means हमें future predict करना है. Future को हमें क्या करना है कि सपोज कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, वो हमें क्या करना है? गिवन डेटा में से प्रेडिक्ट करके देना है. वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द फ्यूचर और आउटपुट फ्रॉम द अनसर्टेन डेटा और नॉलेज टू. वी हैव टू concept for the statistical learning. First one is the data and second one is the hypothesis. Hypothesis is a very basic and most important term. Hypothesis, that means assumption. Okay, in our state space search scenario, we have a discuss heuristic function or heuristic value. When we talk about the greedy, we have greedy BFS as well as AO star algorithm, A star algorithm. So in this video, UCS, uniform cost search, this kind of the searches we used a heuristic value.
Okay, that means we used assumption value. Okay, so in probability, in our case, in our statistical learning case, we used hypothesis value. That means first one is the data, this one is our knowledge, and second one is the hypothesis. Hypothesis, that means assumption, assume, हमें क्या करना है, assume करना है. So assumption must be as a prior probability or post prior probability. Prior probability, that means unconditional, and post probability, sorry, prior probability and post prior probability, maybe we can say conditional probability and unconditional probability. So hypothesis is one kind of the assumption value or assumption, maybe chance, tukko. Okay, this kind of the word when we can use for the key concept. So in the key concept statistical learning, first one is the data, this one is our knowledge, like table 5 by 7 or 7 by 5, and second one is the hypothesis, this one is our assumption. Okay, so statistical learning are used, statistical learning, application of statistical learning is they are used in the computer vision, robotics, speech recognition, bioinformatics. With this kind of the field we are use of statistical learning, because statistical learning is uncertain knowledge में भी हमें क्या करना है कि हमें हमारे खुद से कॉमन सेंस से भी डिसीजन लेना होता है जो कंप्यूटर में और मशीन में नहीं होती. सो स्टेटिस्टिकल लर्निंग आर यूज फॉर द कॉमन सेंस और कॉमन इंफॉर्मेशन और कॉमन knowledge. So they are used in the computer vision, speech recognition, and bioinformatics science. Okay, so let's discuss one example for the candy bag. Okay, it's a very interesting and very famous example for the probabilistic or statistical learning. If first of all we discuss a prior probability and conditional probability. Prior probability, that means without any evidence, without any data, you learn from the that given and given the output like that, it's called a prior probability. आपको क्या करना है prior probability में, आपके पास कोई evidence नहीं है, आपके पास कोई data नहीं है, सिवाय आपको क्या करना है, आपको assume करके कुछ आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन्स प्रायर प्रोबेबिलिटी. एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स व्हेन वी हैव एनी एविडेंस और एनी प्रूफ, any predict data from our data or from our knowledge, this kind of conditional probability. Prior probability we can say unconditional probability also. Okay, so let's discuss a candy bags example. Candy bags example, what is a candy bags example? Candy bags example, that means we have a 5 bag, b1, b2, b3, b4 and b5. B for bag. Okay, so we have a 5 bags. 5 bags contain a candies, like they contain a lime candies, and c means cherry candies. Okay, c means cherry candy. Bag contain, if bag contains c, then that means a cherry candy, and if bag contain L, then it's contain a lime candies. But lime candies and cherry candies are पैक्ड अराउंड वेपर. ओके, उसमें एक वेपर के ऊपर उसको क्या कर दिया है, अराउंड कर दिया है, मतलब उसको उसमें डाल दिया है. वो तो आपको पता नहीं है कि लाइम कौन सी है और चेरी कौन सी है. सो आपको वो भी पता नहीं है कि किस बैग में सारी की सारी चेरी है, सारी की सारी लाइम है, किस बैग में कुछ ज़्यादा चेरी है, कुछ कम लाइम है, कुछ ज़्यादा लाइम है, कुछ कम लाइम है, कुछ में दोनों सेम है. ओके, सो वी डोंट नो इवन, कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है. हमारे पास सिर्फ ये है कि कोई एक 5 बैग है, 5 बैग में से कोई बैग ऐसी है जिसमें सारी की सारी कैंडी है वो चेरी की है, सारी की सारी कैंडी है वो लाइम की है, कुछ कैंडी है वो चेरी ज़्यादा है, लाइम कम है, कुछ में ऐसी है कि लाइम ज़्यादा है, कैंडी कम, चेरी कम है, और कुछ में क्या है, लाइम और चेरी बनने दोनों क्या है, सेम है. सो वी हैव अ 5 बैग लाइक दैट. अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जर्व करना है कि सपोज कि हमारा जो मतलब हाइपोथेसिस वैल्यू है वो हमें एज्यूम करना है. हाइपोथेसिस वैल्यू क्या है, एजप्शन. ओके, तो हमने क्या एजप्शन कर लिया है, हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि H1 जो बैग 1 है ना, उसकी एजप्शन वैल्यू है कि वो सारी की सारी चेरी की कैंडी है. ओके, H5 है वो सारी की सारी लाइम कैंडी है. ओके, H1 है B1 बैग की जो चेरीज है, सॉरी कैंडीज है, वो क्या है, वो सारी की सारी चेरीज है, वो चेरी है, सॉरी कैंडी है वो चेरी की है, और B5 की दैट मीन्स H5 जो हमारा हाइपोथेसिस 5 है वो सारी की सारी लाइम है.
अब हमारा H2 मतलब हाइपोथेसिस दैट मीन्स H2B2 का होगा, तो उसमें से 75% कैंडी है वो चेरी की है, 25% है वो किन की है, लाइम की है। जो H3 है, H3 दैट मीन्स B3 बैग की, जो उसकी जो एजप्शन वैल्यू है वो हमें एज्यूम करनी है कि 50% चेरी है और 50% लाइम है। और H4 क्या होगा कि 75% है वो लाइम की है और 25% वो चेरी की है। ठीक है, सो दिस वन इज द हाइपोथेसिस वैल्यू फॉर द ईच बैग। ओके, डेटा इज D1 D2 D3 D4 एंड D5 एंड हाइपोथेसिस वैल्यू इज H1 to H5। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कुछ कैंडी है वो क्या हो रही है, बैग में से गिर गई है। मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी बैग में से कौन सी चेरी बाहर निकली हुई है, या तो फिर कौन सी चेरी है वो, सॉरी कौन सी कैंडी है वो गिर गई है। ओके, किस बैग में से हमें ये भी नहीं पता है कि सारी कैंडी एक ही बैग में से निकली है या तो फिर सारी कैंडी अलग अलग बैग में से निकली है, बट कुछ कैंडी है वो क्या हुई है, बैग में से बाहर निकल चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि वो जो बाहर निकली हुई चेरीज है, सॉरी कैंडीज है, उसमें से लाइम कितनी है और चेरीज कितनी है, चेरी की कैंडी कितनी है और लाइम की कैंडी कितनी है, और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी हाइपोथेसिस वैल्यू को हमें क्या करना है, काउंट करना है, प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी बैग में से वो निकली होगी। ओके, so simplicity calculate the probability of each hypothesis given the data and makes the prediction on that basis। अब वो हम कैसे करेंगे, वो वाला जो है ना वो हम करने वाले हैं स्टेटिस्टिकल लर्निंग मेथड से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर बिफोर वी मूव ऑन द स्टेटिस्टिकल लर्निंग मेथड वी रिवाइज और बेजियन फॉर्मूला और बेजियन नेटवर्क थियोरी। ओके, बेजियन नेटवर्क थियोरी में क्या था कि यहाँ पर हमें दिया गया था कि इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई द ए गिवन बी, दैट मीन्स अगर बी है वो ऑलरेडी इवेंट हो चुकी है तो ए होने की पॉसिबिलिटी क्या है। ओके, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, दैट मीन्स probability of b given a into probability of a upon probability of b। this one is the Bayesian formula। Okay, this one is our normal Bayesian formula, but if we want to derive our data as a hypothesis and data, okay, if we want we have a two key concept। Okay, first one is the data and second one is the hypothesis that means assumption, and data we have a knowledge। Okay, so if we want to identify the probability of hypothesis when given data, it means अगर हमें कोई भी hypothesis, कोई भी बैग का एक hypothesis हमें अगर जानना है तो वो क्या करेंगे, probability of H1 given data। ओके, तो उसकी probability क्या होगी, तो उसकी probability होगी P of data H1 dot P of H1। Okay, and alpha that means normalization constant। Okay, so this one is our basic formula for the identify the statistical learning method and statistical heuristic value, sorry, hypothesis value for the given data, probability of hypothesis for the given data। So this one is the example of 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 and 0.1। this one is the value of this। Okay, H1 value is 100, H2, H5 value is 100, so here our probability is the 0.0, 0.1 and 0.1। if we have a 0.2, that means 0.2, 0.5 and 0.2। so this one is the example of the हाइपोथेसिस फॉर द कैंडी बैग। बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चेरी है, कौन सी कैंडी है, वो कौन से कलर की है, तो वो जो करने वाला है वो लर्निंग मेथड फॉर द कंप्लीट डेटा, कि हमारे पास जो कंप्लीट डेटा होगा उसके हिसाब से जो लर्निंग मेथड है वो हम करने वाले हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लर्निंग विथ कंप्लीट डेटा इन स्टेटिस्टिकल मेथड। ओके, थैंक यू।